Talking about Vinesh Fogart, she's announced her retirement, but there is hope for a medal for our grappler. Vinesh has requested that she be awarded the silver medal given the circumstances. The Court of Arbitration for Sport is set to deliver its verdict today, and if it rules in her favor, the International Olympic Committee may just grant a joint silver medal to Vinesh. While hearing is on, Give Vinesh Silver chorus is growing, and rightly so. Former Olympic gold medalist wrestler Jordan Burgos took to social media to weigh in on the subject. He said that there should be changes that should now be made to the rules of wrestling at the Olympics, and even demanded a silver medal for Vinesh. Also in the wake of a disqualification, WFI President Sanjay Singh has called for an investigation into the support staff involved, emphasizing that the failed weigh-in was not solely Vinesh's fault. All right, we'll be getting in more details in a moment from now. Right, Vinesh Fogart bidding adieu to wrestling. A day after disqualification from Paris Olympics, Vinesh Fogart announced her retirement. In an emotional post, she said, "Wrestling won and I lost." Announcing her retirement, she said, and I quote, "I don't have any more strength." However, her family and fellow wrestlers are stunned with this decision to retire and want her to do a rethink. Meanwhile, in a big move, Chief Minister of Haryana, Naib Singh Saini, has announced silver medalist honour for Vinesh. Vinesh Fogart will be given the honour, reward and facilities given to a player who wins a silver medal in Olympics, said the Chief Minister. Fogart will also get 4 crore rupees from the Haryana government as part of the announcement for the silver medalist. देखिए, कोई भी हो जो यहाँ तक पहुँचता है, जब मेडल होता है तो सब आवश्यक बात है, वो जो है गुस्से के अंदर जो है ऐसा फैसला ले लेता है। ये तो दोनों जब बैठ के हम सारे बात करेंगे, गीता भी होगी, मैं भी, बजरंग भी हूँ, जब हम बैठ करके जो है बात करेंगे, उसको समझाएंगे भाई लड़ना है, किस नहीं भाई क्या करना है। ये आने के बाद में 5-7 दिन बाद में बैठ के सब बात करेंगे। भाई आपने ये जो फैसला है इसमें बदल और अपने मेहनत करें। कोई विरोध नहीं है। अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो कर दिया गया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नियम है उसके नियम हैं, और बड़े इसके सख्त IOC के UWS बड़े सख्त नियम हैं। इसमें यहाँ पे ओवरवेट की वजह से या कुछ ऐसा हो जाता है, एक बार बाल निकाल देते हैं तो वापस उसको फिर वो अपने डिसीजन को वापस लेते ही नहीं। इसमें अगर ये चीज़ें कभी से चीज़ें होती आई हैं कि अगर जो एक बार फैसला कर लिया UWS ने, उससे वो वापस मतलब इस तरीके के उसमें कभी भी वो अपने डिसीजन से नहीं पलटते। फाइट करनी चाहिए, अभी भी करनी चाहिए, आगे फ्यूचर में भी करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, मैं तो एक बहुत निराश हूँ कि भी गिव अप कर रहे हैं लोग। गिव अप इस मोड़ पे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर गिव अप करना है तो कभी और कोई इश्यू हो, ये नहीं कि अगर कोई किसी ने साजिश रची है तो वहाँ पर मतलब उससे हार मानो। हार कभी नहीं माननी चाहिए, उसका फेस करना चाहिए। अगर उनके साथ साजिश हुई है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले। Vinesh Fogart lost a gold medal by merely 100 grams. On the morning of a crucial 50-kilogram gold medal bout, Fogart was found to be 100 grams over the permissible weight limit, resulting in her disqualification. But who was responsible for this loss? WFI Chief Sanjay Singh has blamed the support staff and assured an investigation. Our next report tells you more. Vinesh Fogart lost her Olympic gold by merely 100 grams. Now her support staff is under scanner. The Wrestling Federation of India will probe Vinesh's support staff after her disqualification from Paris Olympics 2024. Vinesh weighed 49.9 kg before her semi-final match. After 3 bouts, she gained 2.8 kg. Even after working out rigorously whole night, Vinesh weighed 50.1 on the scale. Vinesh Fogart's team took desperate and extreme measures to reduce her weight. The entire team
went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. But who is responsible for this miscalculation? Did the support team fail to strategize for such an important match? Why did not the support team foresee this? Is the support team guilty of incompetence? WFI Chief Sanjay Singh has blamed the support staff. एक सवाल अब जो जहन में आ रहा है वो ये कि काफ़ी करीबी मामला था, 100 ग्राम कहा जा रहा है, 150 ग्राम कहा जा रहा है, जो भी है, क्या सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे? जो डाइटिशियन है, 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और इसके जिम्मेदार वही हो। The WFI will investigate Vinesh Phogat's personal staff, including Hungarian coach Wooler Ekos and physio Ashwini Jeevan Patil, strength and conditioning specialist Wayne Patrick Lambard and Mayank Singh Garia, and her sparring partners Shubham and Arvind. Can support staff escape the blame for costing India its gold? While India has lost a medal, a probe can help prevent a repeat in the future. Bureau Report, India Today.